morning and Assalamu alaikum. This is me, Yarud Syed, and we are going to continue our third lesson that is on words which commonly confuse. Okay, so let's come to a word. First word that is many and much. Where to use many and where to use much. The meaning is same, but we have to understand where to use these two words in our sentences. Okay, so first one is many and the meaning is बहुत जैसे बहुत से लोग. Next one is बहुत जैसे बहुत सा दूध. It is considered and used for the quantity, and this one is used for the members. Okay, so let me just use these words in sentences. So the first one is there were many students in the class. So I'm just using this word many in my sentence for the persons, for the students. Okay, there were many students in the class. And the next one is much. We haven't much milk. हमारे पास ज़्यादा दूध नहीं है. The meaning of that word was that. Okay, so as you can see, this one is much is used for the quantity and many is used for the members or persons or people. Okay, so these are two words with same meaning, but we have to just use carefully that we have to use this word for members and this one is used for the quantity. Okay, so the next one is may and might. Okay, and the meaning of these two words are same. As you can see, sakna, as we have also learned can. Okay, so you just have to understand the meaning of these words using a sentence, as I'm going to use these words in sentences. As he may come today. Okay, so I'm just going to add this word that like you have to use may for present tense. Okay, zamana हाल में जो आता है. Okay, and the next one is might and we use it for past. This word is used in a past tense and we use it as in our sentences using a past tense. Okay, wait, yes, so I'm just going to use these words in sentences. As you can see, he may come today. वो आज आ सकता है. And the next one is he might have come if you had written a letter. अगर तुमने खत लिखा होता तो वो ज़रूर आ जाता. Okay, now you better understand what is the meaning of may and what is the meaning of might, where to use may and where to use might. I'm just going to repeat it. He may come today. This is being used for the present tense, and he might have come if you had written a letter. This one is used in a past tense. अगर तुमने खत लिखा होता तो वो ज़रूर आ जाता. Okay, so that was all for may and might. Let's come to the next one, that is people and person. These two words are also same in meaning, but you have to understand where to use in our sentences people and persons. The meaning of this word is लोगों का गिरोह, persons बहुत से लोग. Okay, and it means people means the group of people's persons, students or children, they all are in group. Persons, people in group. Persons means बहुत से लोग. There isn't any group of those people or persons. Okay, person is used for the ये उन लोगों के लिए यूज होता है जो जिनका कोई ऐसा ग्रुप नहीं होता पर बहुत से लोग होते हैं. पीपल इज़ यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पर्सनस. लोगों का जो ग्रुप होता है उसके लिए हम पीपल को यूज़ करते हैं. एंड आई होप इट्स क्लियर टू यू नाउ. सो let's use these words in sentences.
द पीपल ऑफ इंडिया वर पुअर, हिंदुस्तानी बशिंदे गरीब थे. और आई कैन ऑल्सो यूज ही पाकिस्तान or any country. I'm not just specifying this word, this sentence for these for any specific country. You just have to take it general. So the sentence was, the people of India were poor. It means there is a group of poor people. ये एक मैंने इस एक उसके जो ग्रुप है इंडिया का उसको मैंने हाईलाइट किया. द पीपल ऑफ इंडिया वर पुअर. Okay, and the next one is person. Only 13 persons remain in the cinema hall after the interval. इंटरवल के बाद सिर्फ 13 आदमी सिनेमा हॉल में रह गए. ठीक है, अब यहाँ पे हमने मेंशन किया है क्वांटिटी ऑफ पीपल कि कितने लोग, कितने पर्सन. ठीक है, यहाँ पे हमने बताया कि पीपल, वो ये जस्ट हम इनको एक ग्रुप में कंसीडर करके उसको हम बता रहे हैं कि देयर वर पुअर पीपल, रिच पीपल एंड पर्सन्स को हम क्वांटिटी उनकी बता रहे हैं कि उनके मेंबर्स कितने हैं और कितने लोग हैं वहाँ पे. क्लियर. नेक्स्ट वन इज रोप एंड स्टील. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? रोप मीन्स ताकत के जोर पर किसी से कोई चीज़ छीनना, एंड द नेक्स्ट वन इज स्टील, कोई चीज़ चुरा लेना, लाइक छुपके से किसी से चुरा लेना, दैट इज़ कॉल्ड स्टील. और किसी को प्रेशराइज करके और गन पॉइंट पे किसी से कोई चीज़ लेना, उसको क्या बोलते हैं? रोब. So let's use these words in sentences as I'm going to use it. The robbers rob wayfarer usually at night. लुटेरे अक्सर रात में मुसाफिरों को लूटते हैं. ओके, तो लूटने वाले कौन होते हैं? जो गन पॉइंट पे हों, लोगों से चीज़ें छीनते हैं. और स्टील करने का मतलब ये है कि यू जस्ट हैव टू स्टील दोज थिंग्स विदाउट एनी परमिशन and without knowing them. Okay, so let's use this word in sentence as, bad boys steal books of their class fellows. बुरे लड़के दूसरे हम जमात की किताबें चुराते हैं. ओके, चुराते मीन्स किसी से, एज आई हैव क्लियर यू बिफोर, के उसकी परमिशन के बगैर और उसको नहीं इल्म कि उसकी चीज़ चुराई जा रही है या उससे उसके उठाई जा रही है, उससे ली जा रही है. ठीक है, इसे कहते हैं चुराना. जस्ट अंडरस्टैंड विद द मीनिंग इन उर्दू. इसे कहते हैं चुराना और इसे कहते हैं छीनना, ज़बरदस्ती किसी से छीन लेना. एंड द नेक्स्ट वन इज शेल एंड विल. वेयर टू यूज दिस वर्ड? दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर फ्यूचर टेंस, ज़माना मुस्तकबिल की. ही, शी, सॉरी, शेल को हम यूज़ करेंगे आई, वी के साथ लगने वाला वर्ड है. जैसे शेल, ही शेल, सॉरी, आई शेल एंड वी शेल. एंड विल को हम ज़माना मुस्तकबिल में यूज़ करते हैं ही, शी, इट, दे, यू के साथ लगने वाला फेल, जैसे ही विल, दे विल. ओके, so let's use these words in sentences. I will reach in time. I will reach in time. अब यहाँ पे मैंने I के साथ will लगा दिया. अब मैं यहाँ पे ये क्लियर करूँ कि पक्का इरादा जाहिर करना हो तो shall और will आपस में बदल जाते हैं. ओके, just clear, just note this point कि अगर यू आर जस्ट श्योर अबाउट एनी पॉइंट, यू जस्ट हैव टू, दे कैन बी यूज्ड एंड दे कैन बी शफल्ड, लाइक शैल एंड विल कैन बी शफल्ड. यू जस्ट हैव टू यूज आई, will with I as well. Okay, so I'm just going to use shall in the sentence. You shall not reach in time. तुम वक्त पर बिल्कुल नहीं पहुंचोगे. And the first one was I will reach in time. मैं वक्त पर ही पहुंचूंगा. Okay,
The second one was you shall not reach in time. तुम वक्त पर बिल्कुल नहीं पहुंचोगे. Okay, that was all for shall and will. Here I have written you can use I and we with shall, and he, she, it, they, you will be used with will. Okay, and the next one is state, say. What is the difference between these two words? State mean बयान करना रस्मी तौर पर, formal, और next one is say, आम तौर पर कहना, like usually. Okay, so let's use these words in sentences. The first one was state. The Pakistani ambassador stated the terms for a ceasefire agreement. पाकिस्तानी सफ़ीर ने मुआहदा अमन की शर्तें रखीं. It means state is used for a formal statement. And the next one is say. You say that you won't complete the job. तुम कहते हो कि तुम काम पूरा नहीं करोगे. This one is not formal. This one is a formal statement. Okay. बयान करना, आम तौर पर कहना, like usually you just have to say anything. And this one is a state that you give a official statement. Okay, and the next one is stay and stop. Stay means क़याम करना, ठहरना. Stop ख़त्म करना, रोकना. Okay, these were the meanings in Urdu. So let's use these words in sentences. The first one was stay. We stayed at the hotel for 2 days only. हम सिर्फ 2 दिन के लिए होटल में ठहरे. We stayed like क़याम करना, वहाँ पे हम कितने दिन ठहरे? 2 दिन ठहरे. So that's why here we have used the word stayed for some time, for some days. Okay, the next one is stop. Okay, it's permanently ख़त्म करना, रोकना. This one is used in that sense. We stopped the work and returned home. हमने अपना काम ख़त्म किया और घर लौटे. Okay, I hope it's clear to you now. यहाँ पे हम कुछ अरसे के लिए रुके, then we returned back to our homes. For 2 or 3 days we just stayed in the hotel, and then we returned back to our homes. And the second one was we stopped the work and returned home. हमने अपना काम ख़त्म किया और घर लौटे. And the next one is win and beat. What is the difference between these two words? The first one is win. The meaning of this word in Urdu is खेल में जीतना. And the next one is beat. दूसरे खिलाड़ी को हराना. Getting my point? What I want to say? Win means खेल में जीतना. And the next one is दूसरे खिलाड़ी को हराना. So let's use these words in sentences like we won the match. I'm just using the second form of this word. We won this one. We won the match. And then हमने मैच जीत लिया. And the next one is I beat you while playing cards or any game you can write here. Okay, मैं ताश में तुम्हें हरा देता हूँ. I beat you while playing cards. मैं ताश में तुम्हें हरा देता हूँ और देती हूँ, or you can use any word here. Okay, is it clear to you? That was all for today, and just keep watching the videos and keep sharing. And if you still have any question, then ask me, I'll answer. Take care. Allah Hafiz.